Assalamu alaikum, everyone. Welcome to today's session. Today, I'll be talking about theory of computation, and there will be some very interesting things to talk about. In order to understand this theory, it's important to have a grasp of some basic concepts, and one of them is the concept of function. As you know, most of you are familiar with this function. You have been doing this in your previous classes. So a function is it's a mathematical object, or it's a mathematical rule which associates input values to the output values. And the characteristic that makes a function is that it always produces a unique output. When you give it an input, there's always single and unique output. So that's the unique characteristic of function. Okay, and how do we find out which output value is associated with which input value, right? So there are two ways we can do this. One is that we can generate a table and just look it up, right? Or the second one is to do some calculations to find out what's the correct output value. It is interesting to note that not all functions are computable. So it means you can define them in very simple terms, but when it comes to computing them, what's the output value for a given input value, it's simply not possible. So some of you were in the previous class, asking me how is it possible, or do you want to find some examples? So we'll come across those examples today, right? This is the first method, that you have a table and you just look it up the correct value. What's the output value corresponding to an input value? Okay, now there are two sort of limitations of this method. One is that not all input values are listed in the table. For example, if the function is one that works on real numbers, which means that numbers that include some value out after the decimal value, for example, 1.5 or 1.53. Your table would not be able to list down all of them because there are infinitely many real numbers. So it's not possible to use this approach in that case. So this approach works in simpler cases. For example, when the inputs are limited and have integer values, or there is some finite set which is manageable. So this works. The second limitation of this approach is that somebody has to compute these output values in the first place to create this table, right? So you cannot create this table by looking at another table which already exists, because every table that you use would have to be created by someone at some point in time. So therefore, we go to the next approach, which is to compute it. Now, computations, the question is, what is computation? This is a basic question in theory of computation. What is meant by computation? How do you compute? What exactly is the thing that is called as computation, right? So in computer science or theory of computer science, computation is when you take an input value and you have a rule given to you that rule converts it into the next value, right? And sometimes the computation involves many such steps. So if there are many such steps, we say that it's the algorithm for computing this value. So if you are given a value, you apply that algorithm and you get the output value. And by applying an algorithm, it means that you take the input value, perform some defined operation, very precise, well-defined operation on that. It could be as simple as just adding two numbers together, or multiplying one number by itself, or dividing number by something. So very basic arithmetic operations that come under computation, right? So you take an input value and apply some very well-defined operation. So I've already mentioned that basic arithmetic operations come under those operations that you can apply.
Then you have also studied logical operations like and, or, and not. You can apply these kind of operations also. For example, if it's data is binary data, you can apply not operation. So which means that if the input is 1, you change it into 0, or if the input is 0, you change it into 1, right? So these are very well-defined steps that you can actually carry out. Now, how do we actually perform this calculation? How do we convert a 1 into 0, right? So if the agent that is performing this computation is a human being, they can use their brain and they can use their hands and eyes and a paper and a pencil to do these computations, right? So if they find 1 written, they can write a 0 underneath it. So we'll say, okay, they have performed this NOT operation. But these things can also be performed by a computer or a robot, for example, right? A robot has a camera, for example, and it sees a 1 written on a paper, and then with the help of a robotic arm, it writes a 0 over there on the paper. But mostly computers don't work in this manner. Like they're not like robots that are performing all the computations. Instead, what happens is that all these input values are transformed into electrical signals inside a computer. And then we have circuits, electrical circuits, that take those input signals, electrical signals, and convert them into output electrical signals, right? So these are the circuits that perform these computations. So we first represent information, whatever is our input. We convert that input into electrical signals, and these electrical signals are then sent to this computer circuit, and the circuit produces the output signals. These output signals, then there is an output device that takes these output signals from the circuit and convert it into a form that humans can understand, right? For example, it can take those output signals and convert them into a picture that can be displayed on the screen, right? So humans can read whatever is written on the screen, or they can take that input and print it out on a paper, right? So humans can also read what's written on paper. Maybe they can even take those inputs and convert them into voice through speakers. That's also like sort of output device. So the task of the output device in a computer, whatever that output device is, whether it's a printer or a speaker or a screen, or maybe in newer type of computers, we have VR goggles or something. So all these output devices take the whatever has been produced by the computation circuit and convert it into a form that we can understand. So the basic, if you look at the computer in its essential form, it has these 4 devices. One is the output device that I've been talking about. The other one is obviously the input device, because if you want to perform some computations, you have to first input them into the computer circuit. So if you are just punching in on a keyboard, then the keyboard is the input device that takes your keystrokes and converts them into electrical signals that go into the computer circuit, and so on and so forth, right? So we have an input device on one hand, the output device on the second hand, and in the middle we have the computation circuit that is converting inputs into outputs. And the fourth function unit of a computer is the storage device. So storage, we need to store data, at least for the time being. It's being processed by those circuits, but sometimes even for longer term, because if we are performing a big algorithm, sometimes we need to store the values produced in the first step, because they might be again used in say the second step or fifth step or last step, right? So we need to store the results, intermediate results or final results inside the computer, so that they can make use. So sometimes we just use computer to store data information and we can recall it later.
So that's another function of a computer, that we can store a lot of information in it, just like we can store information in books. We can also store information on computers, and we can retrieve that information from the hard disk. But that's not the only purpose of storage devices. Storage devices are essential for carrying out the computation, because without storage devices, actually, computations might not be possible, because sometimes in a big algorithm, you need to keep track of a lot of intermediate results. For example, if you're multiplying a large matrix, let's say a 10 by 10 matrix, you need to do a lot of calculations and store them and add them together to come to the final result. So computations require this medium where you can store values that you're working on. So if we take all these four components, we can represent them by the simplest computer. It's called Turing machine. So Alan Turing was computer scientist who in 1939 thought of this, okay, what would be the simplest possible computer, and what would be its essential components, and he came up with this model. So this model that you see is a Turing machine, because it has the storage device, the tape at the bottom that you see, that's the storage device. Sometimes you need to move it back and forth so that you can go back to the results of your previous calculations, and then you go forward in order to compute the next step, and so on and so forth. And the read-write head over here is acting both as the input and output devices, because in a Turing machine, input also comes through the tape, and output is written back on the tape. And the control unit is the central circuit that I was talking about, that converts inputs into outputs, and it does that by performing these basic operations. And how many basic operations to perform and in what sequence, these are the rules that are embedded in your algorithm. So your algorithm tells you what rules have to be applied on these values so that we can proceed to the next step, and then proceed to the next step. And finally, there must be some way of knowing that we have reached the end of our computations, and this is the final result, right? So it means that sometimes you can keep on going for a long time, executing your algorithm. It might be, for example, if you are multiplying two very large matrices, for example, a million by million matrix by another million by million matrix. So that might require you to go through the loops of millions of times before you can actually produce the product of these two matrices. So these rules are embedded in the algorithm that is executed by the control unit. So the control unit takes these instructions somehow in there. So in modern computers, they are stored there in form of a program, and program gets executed one step at a time. And that's similar to what I was saying, that in an algorithm, you need to execute each step. And once you know that you have completed this step, then you go on to the next step, and so on and so forth. So this model is a model of essential computer. Why is it important? This is important because any computer in the world is based on the same model, right? When I say any computer in the world, I mean mostly all the computers that we use today, right? They are digital computers. I'm not talking about quantum computers. I'm not talking about biological computers. And now I'm not talking about maybe some other type of computers, analog or gravity or something else. The electrical, digital, binary computers that we use these days, almost all of them have the same basic components. They're based on the same model. But even more important than this is the actual definition of computation, right? So anything that you can compute on a Turing machine is called as computable. So any function that you can actually compute
on a Turing machine will be called as a computable function, and a function that you cannot compute on a Turing machine will be called as a non-computable function. So it's not just the technology part we are talking about, that all computers are based on this model. We are now talking in more theoretical terms, that what the actual definition of a function being computable is that the Turing machine should be able to compute it, right? So there is a very deep connection with the theory of computation of Turing machine, right? So any function that is computable, you can compute it on a Turing machine, and any function that you can compute on a Turing machine is actually computable. And if you cannot compute it on a Turing machine, then it's called non-computable, right? Because it's, so the definition of computable means that we should be able to execute well-defined operations on the inputs in a sequence until a point there where we get to the result, right? So if there is no algorithm that can solve that problem, or if there is no way of knowing in advance whether the algorithm will actually end, that would also be considered non-computable, because there are many problems that we'll see some of them in the next slide, that it's not possible to predict in advance in any way of whether this program or this algorithm will actually end or produce result. So without waiting further, let me go to the next slide. So this is the Turing machine operation. It is just, you can see from the slide that it simply means that you are executing an algorithm. So there's an input at each step. So that defines the state of the machine, and which means there is a value at the current tape position. And then you apply those operations, the actions at each step, right? So what new value is to be written, whether you want to keep the same value or change it or delete it, or and then you move the read-write head left or right, because now you have completed this step. Now you have to go to the next location on tape, and next location, when you are in next location, it means the state of the machine has changed, right? Because as we have seen through our exercises also, a state means what is the configuration of everything. So if the read-write head was at cell 0 and it has moved to cell 1, that's a new state. So what is the significance of these states? Because the algorithm tells you what actions to perform in which state. Because as we saw in our previous class also, that in each state, only a specific set of moves are allowed. Only a specific set of operations you can perform at each state, right? So the state defines what are the operations you can perform at this point, right? And when you have performed those operations, you go to the next state. And the next state has its own constraints and own possibilities of what can be done in that state, right? So this is the operation of a Turing machine, that it goes from state to state, right? And physically, we can just see that if it's moving from one cell to another on tape, that's an indication that is going from one state to another state. But essentially, a Turing machine always has a state, which means that it knows what are the values of the variables that is computing at the moment. And then it performs those operations. It knows what operations to be performed in that state. And when those operations are performed, we get new state, which has new values for all the variables and new set of rules that needs to be applied. And finally, we come to a state which says, okay, the computation has to stop now, and we must
print out the output results or generate the output or whatever the program was supposed to do, right? So the Turing machine starts with the current state, initial state, or the first state, and then looks at its inputs. What are the inputs? And then it looks at its own set of rules. Okay, on these inputs, what are the rules that need to be applied? Then we apply those rules, which means we execute some operations, which could be mathematical or logical operations. And then after we have completed those operations, we get to a new state. And in a new state, we have new values for all the intermediate variables. And we also have a new set of rules which must be applied on this new state. And we keep on doing that. We keep on moving from state to state to state until we finally get to the final state where the computer has to stop and declare that computation has been executed successfully, right? We might also end up in an error state also. There, that also says, okay, the computer has to stop because it has encountered an error. But if we exclude this, excuse me, sir. Yes. Sir, so does this apply to the assignment you gave? Like in the assignment, do we have to reach the goal state? No, there was just an exercise to tell you that you can go only from, you can only go to the permitted states. You cannot go to a random state, right? In that assignment, this was not the requirement that you need to reach some specified state in the end, right? Wherever you are, if it's a legal state, then that's fine. And let's go to the next slide. Okay, so this next slide is a simple example of how a Turing machine can be used for adding 1 to the input value. So whatever the input value, these operations will add 1 to that input value. Now, they look complex right now, but I will leave this slide on your LMS so you can work through it. So you can see the important things that you can note over here is that it has a start state over here, right? and a halt state over here. In the end, you have to stop. So you start and then look at what are the values in the current cell. Okay, if these are star, then you write a star in the current value and then move left, and you enter a new state. It's called add, right? And when you are in add state, you see what are the values at the cell that you are right now, right? Is it a 0? Is it a 1? Or is it a star? If it's a 0, you add 1 to it. You write 1 over here. But if it's a 1, you write 0, because you know that in binary, when you add 1 to 1, it produces 0 with a carry of 1, right? That's why you also see these 3 carry states over here. And then you have overflow state and return state. I will not go through all the steps over here to show you how this work, but you can verify for yourself that whatever the input value you give to this Turing machine, it will add 1 to it, and then it will halt, right? So this is just to demonstrate that Turing machines can perform all kind of operations, right? They take a little bit of thinking to come up with, well, okay, what are the rules that need to be applied at each state? But once you have thought through all the possible states and all the possible values, then you will be able to write this sequence that is shown on the screen, or a similar sequence for any problem that you can think of, right? So essentially what I'm saying is that no matter what problem you have or what computation you have, if it is computable, you'll be able to write it in this manner
which is just a combination of states and how to move, how to go to the next state, the rules explaining how to go to the next state, right? And in the end, you will always enter the halt state where the computer will stop and print the final result. So by the time in a Turing machine, by the time you come to the halt state, whatever is on the tape would have been converted into a new value, which would be one greater than the value that was written on there before you started executing this program. So this is here just an example. Okay, now the important thesis that I was talking about is called Churchman-Turing thesis or Church-Turing thesis. And it simply says that functions that are computable by a Turing machine are exactly the functions that can be computed by any algorithmic means. Like if you cannot find an algorithm, then it won't be possible to compute it on a Turing machine, and vice versa. Like if you are not able to compute it using Turing machine, then you will not be able to compute it using any computer or any algorithm, right? So there is a one-to-one definition, one-to-one correspondence between the definition of computable functions and the operation of a Turing machine. Turing machine can compute all computable functions, and functions that cannot be computed by a Turing machine are called as non-computable. Now let's look at some of the examples of functions that are not computable. So here is where I will need your attention, because if you don't pay attention, you will simply miss the point over here. So please be very attentive in this, right? And I also need your responses and answers. So there, I'll be putting on some questions, very simple questions, and you will just answer me very simply. Okay, so let's call the set of all odd numbers as O. So is this clear to all of you? What is O? Yes, sir. O is the set of all odd numbers, right? E is a set of all even numbers. Is this clear to all of you? Yes. Yes? Yes, sir. No problem so far? Okay, X is another set. And I have to ask you this question of whether X is a finite set or an infinite set. It's a simple question. You just have to tell me whether it's a finite set or an infinite set. Sir, what is this operation? Is this union of those two sets? No, I have just written it out. Okay, X is a set. Ji Rayan, aap bataiye. It's infinite. It's infinite, right? So how many of you say that it's infinite? Sir, O and E are the subsets of X. D? And O and E are the subsets of X. I mean, X has two elements or two subsets, O and E, right? Maybe ye O or ye O same hai, okay? This O and this O and this E and this E, they are the same, right? So O and E are actually, they are two elements or two subsets of this new set X, right? Yes, that's right. These are the Okay, members. O is a member of X and E is a member of X, because they're both enclosed in these curly brackets, right? So what is the Yes, size of sir. G? X is infinite. X is not infinite, because most of you have raised your hand, and if you are thinking that's infinite, that's not right, because it's a finite set having just two elements. The size of X is two elements. One element is O, the other element is E, and we stop here. There's no other element. Can you see any other element listed here in the definition of X? Definition of X में सिर्फ दो elements दिए हुए हैं, ठीक है? इस तरह से हम लिखते हैं. but sir, independently O and E are infinite, right? इसके अंदर तो आप कह रहे हैं कि उनके दो elements हैं तो ये हो गया finite, लेकिन O and E they independently are infinite, right?
ओ सेट जो है, ये वाला सेट जो ऊपर पहला लिखा हुआ है सबसे पहले, दिस इज एन इनफाइनाइट सेट। बिल्कुल मैं एग्री करूंगा, क्योंकि देयर आर इनफाइनाइट की मैनी ऑड नंबर्स, इसमें कोई शक नहीं है। O is an infinite set. E is also an infinite set because अगर मैं इनकी लिस्ट बनाना शुरू करूं इवन नंबर्स की 2, 4, 6, 8 और इस तरह से, तो वो लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है, I won't be able to write it like this, जैसे मैंने ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैंने तो उसको एक कर्ली ब्रैकेट लगाया, फिर उसका फर्स्ट एलिमेंट लिखा, फिर कॉमा लगाया, फिर दूसरा एलिमेंट लिखा, और उसके बाद क्योंकि सेट खत्म हो गया इसलिए मैंने उसका ब्रैकेट बंद कर दिया। ठीक है, तो ब्रैकेट बंद वाला ब्रैकेट हम उस वक्त लगाते हैं जब जब सारे एलिमेंट लिस्ट हो जाते हैं। ठीक है, जब सारे एलिमेंट कब लिस्ट होते हैं, सारे जब वो फाइनाइट सेट है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज अ फाइनाइट सेट एंड इट हैज वन मेंबर एंड टू मेंबर्स। ठीक है, ये इनफाइनाइट है क्योंकि इसको मैं इस तरह से नहीं लिख सकता, 1, 3 और इस तरह से लिखता चला जाऊं। मुझे ये ब्रैकेट क्लोज करने का कभी मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, बिकॉज जितना भी मैं नंबर लिखूंगा उसके बाद एक और नंबर आएगा, तो वो मुझे वो लिखना पड़ेगा, और दैट्स व्हाई इट्स एन इनफाइनाइट सेट। इसी तरह इवन नंबर का सेट को मैं नहीं लिख सकता इस तरह से, क्योंकि मैं अगर मैं लिखना शुरू करूंगा तो आई विल never reach the end of this list. So I will not be able to write it like this. But this was very simple. मैंने आपको ब्रैकेट शुरू किया और फिर ब्रैकेट बंद कर दिया, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट्स थे। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई सबको कि ये x जो है ये फाइनाइट सेट है, इसके 2 मेंबर्स हैं। या Yes, sir. किसी को कंफ्यूजन है? Yes, sir. Yes, Clear. sir. ओके, गुड। तो यही मैं कह रहा हूँ कि देखिए इसमें ये वाला बहुत सिंपल सा स्लाइड है, लेकिन आपको अटेंशन चाहिए। ठीक है, जैसे अभी इसमें बहुत सिंपल सा था ये कि ये फाइनाइट सेट है, इसके 2 मेंबर्स हैं। अच्छा, O and E are infinite sets and X is a finite set, ये हमने अभी डिटरमिन किया। इससे सब एग्री करते हैं, yes or no? इस स्टेटमेंट से Yes. everyone agrees with this statement. Good. Next statement. Yes. Y is a set of all infinite sets. ये किस समझ आ रही है आप स्टेटमेंट सब लोगों को? ये वाली Yes, sir. और से सोचें, बताएं। ये स्टेटमेंट सबको समझ आ रही है? Yes. Yes, sir. अच्छा, अगर किसी को समझ नहीं आ रही वो प्लीज बताएं मुझे कि मुझे ये समझ नहीं आई स्टेटमेंट। चलिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे समझ नहीं आई तो आप मुझे कैसे समझाएंगे कि ये क्या है? Y is a set of all infinite sets. तो एक्सप्लेन करें मुझे क्या मतलब है इस सेंटेंस का। Sir, जितने भी infinite sets हैं वो सारे y के elements हैं। Y के एलिमेंट्स है। एक्सीलेंट, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, तो अब मेरा एक और सवाल ये है कि इज O, ये पहला वाला जो है ये वाला O, इज O a member of Y? Yes. Yes. O is a member of Y. Why? क्यों मेंबर है ये O? Because it is an infinite set. जो भी इनफाइनाइट सेट होगा वो Y का मेंबर होगा, बिल्कुल सही है। तो इज E a member of Y? Yes. 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 Good. Is X a member of Y? No. 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 Excellent, बिल्कुल सही जा रहे हैं अभी तक। X is finite. X is finite, तो Y का मेंबर नहीं होगा, बिल्कुल सही है। ओके, ये एक और क्वेश्चन आया, इसका जवाब क्या है? Sir, it Sir. depends on whether the number of infinite sets are infinitely many or they are finite. तो आपका क्या That's ख्याल है? mathematics. Sir. Sir, I think infinitely many because if we consider, I mean, I think it's infinitely many. There are infinitely many infinite sets. नहीं, सिर्फ मुझे इसका yes or no में जवाब दें लास्ट वाले क्वेश्चन का। Is Y a member of itself? Yes or no? Yes, sir, it सर is. हर Yes. सेट का एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है, तो जो वो खुद होता है, तो फिर y भी अपना इम्प्रॉपर सबसेट होगा, यानी कि y इज अ मेंबर ऑफ इटसेल्फ। देखिए Y जो है ना,
आपने बताया था, अभी मुझे एक्सप्लेन किया था थोड़ी देर पहले, कि कोई भी अगर इनफाइनाइट सेट होगा वो वाई का मेंबर होगा, ठीक है ना? आपने बताया था मुझे अभी थोड़ी देर पहले। जी तो क्योंकि वाई भी एक इनफाइनाइट सेट है, ठीक है, हमें ये पता करना है कि वाई जो है वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। जैसे हमने एक्स को पता किया था ना, एक्स को हमने बता दिया था कि ये फाइनाइट है, ठीक है, जी ठीक है। सर। वाई जो है इटसेल्फ, वाई जो है वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? वाई भी इनफाइनाइट है। वाई इनफाइनाइट है। अगर वाई इनफाइनाइट है तो वो अपना मेंबर होगा, जी यस। ठीक है ना? अगर यानी कि हम लिखना शुरू करेंगे इसको, वाई को, जो ये वाली नोटेशन होती है, तो उसमें हमने फॉर एग्जांपल ओ लिख दिया, ई लिख दिया, उसके बाद वाई भी लिखेंगे, उसके बाद और बहुत सारे जितने भी इनफाइनाइट सेट्स होंगे वो सारे हम लिख सकते हैं। ऑब्वियसली ये लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन वी कैन स्टार्ट मेकिंग दिस लिस्ट, ठीक है। और उस लिस्ट में वाई आ जाएगा, क्योंकि वाई जो है वो खुद भी इनफाइनाइट है। तो y is a member of itself, yes। यहाँ तक आप बताएं जितने लोग एग्री कर रहे हैं, यहाँ तक सही आ गए ना हम लॉजिक के हिसाब से? y is a member of itself because y is infinite, और जितने भी इनफाइनाइट सेट्स हैं वो y के मेंबर होते एक्सक्यूज मी सर, इसमें तो आप ये वाली लॉजिक यूज कर रहे हैं ना कि क्योंकि वाई सारे इनफाइनाइट सेट्स का सेट है तो इसलिए वो अपना अपना खुद का भी एक है मेंबर, या आप इसमें ये वाली लॉजिक यूज कर रहे हैं कि हर सेट का एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है तो वाई अपना इम्प्रॉपर सबसेट है? मतलब मेरी कौन सी वाली नहीं नहीं, पॉइंट आप के ऊपर आप चल सबसेट्स रहे की हैं? तरफ नहीं जाए, आप सबसेट्स अच्छा अच्छा। सबसेट्स को भूल ओ, जाए। जी वी जी। आर नॉट टॉकिंग अबाउट सबसेट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट मेंबर्स, ठीक है। मेंबर्स और सबसेट्स अलग चीज होती है। मेंबर का मतलब ओके है सर। कि हम जिसका एक नाम रख सकें मेंबर का, ठीक है। तो ये यस हो गया आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Z is a set of all sets that are not members of themselves। अच्छा, ये इसको मैं समझाता हूँ क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल है। बताएं, पहले O पे देखते हैं। Is O a member of itself? नो No, ठीक है। Is E a member of itself? नो Is X a member of itself? नो Is Y a member of itself? यस Yes। तो O जो है वो is not a member of itself, E is not a member of itself, X is not a member of itself। यहाँ देख सकते हैं आप, X लिखा हुआ नहीं है। अगर हम मैं ऐसे लिख देता X is equal to O E comma X और फिर ब्रैकेट बंद करता, फिर मामला चेंज हो जाता, लेकिन ये मामला नहीं है। मामला है इसके अंदर सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो X is not a member, लेकिन Y is a member, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था, ये अगर हम लिखना शुरू करें तो Y आ जाता है। Z एक सेट है of all sets that are not member of themselves। इसका मतलब है कि O इसका मेंबर हो जाएगा Z का, E भी मेंबर हो जाएगा और X भी मेंबर हो जाएगा, ठीक है, लेकिन Y मेंबर नहीं हो सकता, ठीक है। ये समझ गया? जी ऑल सेट्स दैट आर नॉट मेंबर, इसमें से सिर्फ तीन हमने देखे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। एक हमने O देखा है, हमने एक E देखा है और X देखा है। ऐसे और बहुत सारे सेट्स होंगे जो कि खुद अपना मेंबर नहीं होते, ठीक है। ये तो Y हमें एक ऐसा मिल गया सेट जो कि अपना मेंबर है, लेकिन नॉर्मली सेट अपने मेंबर नहीं होते। तो वो उन सेट की मैं लिस्ट बना सकता हूँ यहाँ पे, और वो दिखता चला जाऊंगा कि ये सारे सेट जो हैं ये Z के मेंबर्स हैं। Z के मेंबर्स वो वाले सेट हैं जिनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो खुद अपने मेंबर नहीं होते, जैसे कि O E और X, ठीक है सर। जी। सर मगर हम इस हिसाब से तो जो y है वो z का मेंबर नहीं होगा, हाँ, मगर Y नहीं y है। के जो एलिमेंट्स हैं वो o e वगैरह हैं। हम्म अब एक जगह फिर हम इस हिसाब से कह रहे हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये z के मेंबर्स नहीं है, मगर एक दूसरी लॉजिक से हम कह रहे हैं कि o e वगैरह z के मेंबर्स हैं। नहीं नहीं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए, जैसे आपने शुरू में देखा था ना, ये वो आपको यहाँ पे नजर आया था X का,
अंदर, ठीक है। तो इट डजंट मीन कि x जो है वो इनफाइनाइट है, ठीक है। x इज फाइनाइट, उसमें सिर्फ 2 मेंबर्स हैं। z में आपने क्या करना है, z अगर कोई भी चीज है उसका मालूम करना है कि वो z के अंदर हम लिख सकते हैं उसे या नहीं। तो आपने ये सवाल ये करना है कि इज दिस सेट अ मेंबर ऑफ इटसेल्फ, यस और नो, ठीक है। अगर इस नॉट अ मेंबर ऑफ इटसेल्फ तो आप कहेंगे ठीक है इसको z के अंदर लिख दो, अदरवाइज जो है इसको छोड़ दो, ठीक है। तो हम o एक सेट है जो कि अपना मेंबर नहीं है, therefore we can put it in the list. E is another set which is not a member of itself, therefore we can put E in the list. X is another set which is not a member of itself, then we can put X in the list. Y is a member of itself, therefore it will not be written in this list, ठीक है। तो ये लिस्ट बनाने के लिए जरूरी है कि हम सारे सेट्स, जो भी चीज है वो सेट होनी चाहिए पहले, ठीक है। दिस इज सेट ऑफ ऑल सेट्स। पहली बात तो है कि मेंबर होने के लिए उसको सेट होना पड़ता है, और जब वो सेट हमें कोई मिल जाता है उस सेट को हम देखते हैं कि ये सेट किस किस्म का सेट है, ये अपना मेंबर है या नहीं है। अगर मेंबर नहीं है अपना तो हम उसको जेड का मेंबर बना देते हैं, और अगर वो अपना मेंबर है खुद तो फिर हम उसको z का मेंबर नहीं बना सकते, क्योंकि z सिर्फ उन सेट्स की लिस्ट है जो कि अपना मेंबर नहीं होते, ठीक है। सो ओनली दोज सेट्स दैट आर नॉट मेंबर ऑफ देमसेल्व्स बिलोंग टू सेट z, ठीक है। ये अब फाइनल एक क्वेश्चन है, उसके बाद ये जो है पैराडॉक्स खत्म हो जाएगा। इज z अ मेंबर ऑफ इटसेल्फ? इसके लिए मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, सोचें और फिर 1 मिनट के बाद मुझे जवाब दें। So ये भी paradoxical नहीं हो सकता because Z might be included inside of Z because वो a member of itself नहीं बन रहा, but then जब वो बन जाएगा तो फिर वो disregard हो जाएगा। सिर्फ मुझे यस और नो में आपने जवाब देना है। Then I think no. No, z is not a member of itself. Z is not a member of itself, so it means it's just like O, E, and X, ठीक है। तो इसका मतलब है हम उसको लिस्ट में लिख सकते हैं। Sir, but then it becomes a member of itself. जो मेंबर होता है And उसको तो हमने लिस्ट में नहीं लिखा। Sir, with the initial conditions, it is a member of itself, but then when we put it as a member of itself, then, you know, it can't be a member of itself. So, ओके, तो 1 मिनट हो गया। तो ये इसका जवाब ये है कि ये यू आर राइट, इट्स अ पैराडॉक्स और इट कैन नॉट बी आंसर्ड इन यस और नो, ठीक है। ये एक this is not a typical non-computable function. It is one type of non-computable question. You cannot answer this question. Yes or no में इसको आप आंसर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप yes कहेंगे तो आंसर no होगा, अगर no कहेंगे तो आंसर yes होगा, ठीक है। तो इसको सर ये चेक दोबारा समझाते हैं कि वो yes कहेंगे तो आंसर no होगा, no कहेंगे तो yes होगा। आप खुद ही बताएं कि आपका आंसर क्या है, yes है या no है। सर थोड़ा सा डबल माइंडेड हो रहा हूँ मैं। तो यही जवाब है इसका कि आप डबल माइंडेड ही रहेंगे इसमें, क्योंकि ये इसका कोई सिंगल माइंडेड जवाब है ही नहीं इसका ना। तो आप करके देख लें इसे, ये जो इतनी भी चीजें लिखी हुई हैं ऊपर, इसको पढ़ें। आई विल पुट दिस अप ऑन द LMS and you will be able to convince yourself this question, last question, cannot be, you cannot write a computer program that will tell you whether there is a member of itself or not, ठीक है। So it is one example, it's not the main type of non-computable functions, क्योंकि वो मैं आपको और इसकी एग्जांपल दूंगा दूसरी, but is interestingly it's one type। मिसाल के तौर पे इसकी एक और ज्यादा सिंपल एग्जांपल देता हूँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स थी। अगर ये मेरे पास एक पेपर है, ठीक है,
उसके ऊपर मैं लिख देता हूँ कि what is written on the back of this page is false. ठीक है, मैंने एक सिंपल सी स्टेटमेंट लिखी है, इस पे आपको नजर नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं पढ़ के बता देता हूँ. ये लिखा हुआ है कि whatever is written on the back side of this page is false. ठीक है, जो भी इसके पीछे लिखा हुआ है पेज के, वो false है. और इसके पीछे क्या लिखा हुआ है? इसके पीछे लिखा हुआ है this statement is false. ठीक है, इसके बैक साइड पे लिखा हुआ है this statement. यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी इस पेज के पीछे लिखा हुआ है वो false है, यानी कि वो सही नहीं हो सकता, ट्रू नहीं हो सकता, वो false होगा. और पीछे जब आपने देखा तो उस पर लिखा हुआ है दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. तो अगर आप कहेंगे कि ये स्टेटमेंट वाकई फॉल्स है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू होगी. अगर ये फॉल्स है, ये क्योंकि स्टेटमेंट खुद ही कह रही है दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ठीक है, तो ये अगर वाकई फॉल्स है स्टेटमेंट, तो इसका मतलब स्टेटमेंट तो ट्रू है ना, क्योंकि स्टेटमेंट यही कह रही है कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. अगर हम भी कहेंगे कि हाँ ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इसका मतलब होगा कि यस इट्स ट्रू. ठीक है, तो लेकिन दिस स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू. इफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, अगर हम कहेंगे यस दिस स्टेटमेंट जो भी लिखा हुआ है ये सही लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये लिखा हुआ है कि स्टेटमेंट इज फॉल्स. तो ये तो हमें मानना पड़ेगा कि स्टेटमेंट फॉल्स है. ठीक है, तो ये भी इसी पैराडॉक्स की एक दूसरी फॉर्म है. ठीक है, सिंपल सी है फॉर्म लिख दें कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ठीक है, और फिर उसको डिसाइड करें कि ये फॉल्स है या ट्रू है. अगर आप कहेंगे ये फॉल्स है, तो इसका मतलब है कि जो भी कुछ इसमें लिखा हुआ है वो गलत है, और इस पे लिखा हुआ है ये स्टेटमेंट फॉल्स है, इसका मतलब ये गलत है, तो इसका मतलब वो ट्रू होगी. ठीक है, अगर आप कहेंगे ये ट्रू है, तो ट्रू है तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि लिखा हुआ है स्टेटमेंट स्टेटमेंट इज फॉल्स. ठीक है, तो दिस इज another way of explaining Russell's paradox. But what I'm saying is that these are not the main type of non-computable functions. There are many other non-computable functions. These are sort of interesting. That's why I put them up here. दूसरे जो हैं वो हैं halting problem जो है वो non-computable होती है. ठीक है, वो क्वेश्चन ये है सिंपली सी, विल दिस प्रोग्राम एवर टर्मिनेट और नॉट. बहुत सारे प्रोग्राम्स को तो आप देख के बता सकते हैं कि ये टर्मिनेट हो जाएंगे. ठीक है, क्योंकि इसके अंदर अगर एक लूप भी लगा हुआ है, तो आप काउंट करेंगे हाउ मेनी टाइम्स दिस लूप विल रन, उसके बाद फिर स्टॉप हो जाएगा. अगर वो इनफाइनाइट लूप है तो आप कहेंगे दिस विल नेवर टर्मिनेट. ठीक है, तो इट्स इजी टू look at a program and say whether this will terminate or not. ठीक है, लेकिन there are some programs for which it's not possible to determine before कि ये terminate होंगे कभी या नहीं terminate होंगे. ठीक है, तो ये halting problem कहलाती है. ये भी non-computable problems में आती है. There are certain programs for which it's not possible to determine in advance कि ये कभी ये एंड होंगे या नहीं होंगे. तो उसकी एग्जांपल अगेन आप पूछेंगे कि कौन सा एग्जांपल दें मुझे इसका, तो उसकी एग्जांपल ये है कोलमोगोरोव कॉम्प्लेक्सिटी जो है, ये एक फंक्शन होता है, ये नॉन कंप्यूटेबल होता है. ये फंक्शन क्या फंक्शन है, व्हाट इज दिस फंक्शन? ये फंक्शन ये है, मिसाल के तौर पे हमने एआई के उसमें सेशन में देखा था कि कंप्यूटर जो है वो खुद से टेक्स्ट जनरेट कर रहा था. ठीक है, तो लेट्स सपोज कि हमारे पास एक प्रोग्राम है, नहीं प्रोग्राम नहीं है हमारे पास, हमारे पास पहले से जनरेटेड टेक्स्ट है. ठीक है, एक हमारे पास बुक है. Let me pick up the book here. All right, so this is just a page of a random page of a random book. ठीक है, the question is, can you write a program, ठीक है, that will reproduce this page? ठीक है, उसका आंसर आएगा yes, it's very simple. We can write a program. One very simple way to write this program is to just copy whatever is on this page and say print, और उसके बाद पूरा पेज लिख दें और उसके बाद वो प्रिंट हो जाएगा वो पेज. ठीक है, तो
There's nothing really difficult in writing a program that will print this page. ठीक है? But interesting जो question आता है वो ये होता है कि is it another way possible without actually ये पूरी string type in करने के बजाय, is there a way where we can generate a program that will write this this page? ठीक है? ये पेज तो आपको जरा मुश्किल होगा अभी सोचना कि किस किस्म का एल्गोरिथम होगा, लेकिन अगर मेरे पास एक पेज होता जिसके ऊपर सारे वंस लिखे होते थ्रू आउट, ठीक है, शुरू से लेके एंड तक से 1 1 1 1 1 1 टाइप हुआ था, या इवन पाई की वैल्यू प्रिंट हुई होती 3.1415 वगैरह तक पूरे पेज पे, तो वहां पे आपके लिए बड़ा आसान है ये सोचना कि हाँ हमें वी डोंट हैव टू टाइप इन द होल स्ट्रिंग ऑफ वंस, और ये नहीं कहना पड़ेगा हमें कि प्रिंट 1 1 1 1 1, बल्कि हम एक छोटा सा लूप लगा सकते हैं एंड से कि प्रिंट 1 1000 टाइम्स या जितने भी टाइम्स उस पेज पे, ठीक है, तो वो एक छोटी सी लाइन में हम वो पूरा पेज प्रिंट कर देंगे। या अगर पूरी बुक होती जिसके अंदर से 1 1 1 1 लिखा था, तो उसको भी हम उसी प्रोग्राम से जनरेट कर सकते थे उस बुक को by tweaking the value of the number of times, the loop value जो है उसको चेंज करके वो हम पूरा वो जनरेट कर लेते हैं। इसी तरह से पाई की वैल्यू जो है वो कभी कंप्यूट करने के लिए वी कैन राइट अ स्मॉल प्रोग्राम व्हिच विल जनरेट द होल पेज, या अगर पूरी बुक है वो जिसमें से पाई की वैल्यू दी हुई है, तो वो पूरी बुक भी हम जो है उसी प्रोग्राम से हम लिख सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि क्या हम हर किस्म के टेक्स्ट को जनरेट करने के लिए एक सा का प्रोग्राम लिख सकते हैं जो कि उस टेक्स्ट से छोटा हो? जैसे आपने देखा 111 को जनरेट करने के लिए तो बहुत छोटा सा प्रोग्राम चाहिए हमें, एक लाइन का में भी, ठीक है, या 2-3 लाइनों का, और पाई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए भी जस्ट अ स्मॉल प्रोग्राम में भी, फ्यू लाइंस में भी, और उससे फिर हम इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं पाई की वैल्यू की, ठीक है। तो जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ टेक्स्ट है वो तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो प्रोग्राम है हमारा उसका साइज छोटा है। तो ये वाली जो कॉम्प्लेक्सिटी थी, कोलमोगोरोव कॉम्प्लेक्सिटी, बेसिकली ये किसी भी टेक्स्ट को देखती है और ये बताती है कि व्हाट इज द साइज ऑफ द शॉर्टेस्ट प्रोग्राम दैट विल रिप्रोड्यूस द होल इनपुट जो भी आपने दी, ठीक है। और इंटरेस्टिंगली दिस इज नॉन कंप्यूटेबल। दिस इज नॉन कंप्यूटेबल इसलिए क्योंकि अगर आपको ये पेज दिखाया जाए जैसे मैंने अभी दिखाया था, ठीक है, और आपसे कहा जाए कि ये शॉर्टेस्ट प्रोग्राम क्या होगा जो कि ये सेम पेज रिप्रोड्यूस करे, तो you'll have to write all programs one by one और ट्राई करते रहेंगे और देखेंगे कि उनमें से शॉर्टेस्ट कौन सा है। और we never know कि जो शॉर्टेस्ट अगर हमें मिल भी गया, there's no guarantee of knowing कि ये शॉर्टेस्ट है, इससे ज्यादा छोटा और प्रोग्राम कोई नहीं हो सकता। हो सकता है आपका दोस्त जो है वो ज्यादा एक शॉर्टर प्रोग्राम लिख ले आपसे, और फिर आप दोबारा जब ट्राई करें तो आप उससे ज्यादा और छोटा लिखें, ठीक है। So where is the guarantee that this is the shortest program? There is no guarantee, and that's why this, although we know we can define this program very simply, it is just the length of the shortest program that will reproduce a given piece of text, but we don't know what is the size of that. Because we cannot write a program that will compute the size of the shortest program, ठीक है, it's not possible, क्योंकि अगर हम लिखने की कोशिश करेंगे इस तरह का कोई प्रोग्राम, तो वो प्रोग्राम में लेट्स सपोज हमने उसके अंदर लूप लगा दिया which will generate all possible programs in the world, ठीक है, जो कि सिंटेक्स के हवाले से सही हो, ठीक है, एक ऑटोमेटिकली एक ऐसा हमने प्रोग्राम लिख दिया जो कि प्रोग्राम्स लिख रहा है, दूसरे प्रोग्राम्स, देखें पाइथन में प्रोग्राम्स लिख रहा है, और वो सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो करेक्ट प्रोग्राम्स हैं, वर्केबल प्रोग्राम्स हैं, एंड दे वर्क फाइन। तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट कर रहा है आपका जो प्रोग्राम लिखा है, ठीक है। तो कितने प्रोग्राम्स आपको जनरेट करने पड़ेंगे और टू फाइंड आउट के विच इज द शॉर्टेस्ट प्रोग्राम दैट विल राइट दिस, तो दैट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो दिस प्रोग्राम विल नेवर एंड, बट maybe for some piece of text
we might discover कि ये shortest program है, इससे ज़्यादा और छोटा कोई हो नहीं सकता, और उसको हम prove भी कर देंगे this is the shortest program, ठीक है, इससे ज़्यादा program नहीं हो सकता. लेकिन in advance जो है, we cannot look at a piece and decide पहले से कि ये हम वो program find out कर लेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है. This question, whether we will find that program or not, that is not computable. That's uncomputable. इसी तरह से busy beaver इसकी एक sort of cousin problem है, और वो ये है कि what is the shortest program that can produce the largest output, ठीक है. Not है कि ये जो given page है इसकी क्या complexity है, बल्कि कोई भी program कौन सा हो सकता है दुनिया में ऐसा जिसको हम जब रन करें तो वो बहुत large, not infinitely, finitely, but very large output generate करे, और in the end जो है वो it should stop. यानी कि अगर हम इसको busy beaver जो है, ये problem ये है कि अगर हम कहें कि हमें एक 4 लाइनों का प्रोग्राम लिखना है जो कि maximum output generate करेगा, ठीक है, तो what is that program that will generate the maximum output? ठीक है, we cannot find that out. That's another problem that's not computable. So there are many such problems जो देखने में sometimes simple लगते हैं, but actually they're not computable. So that's brings me to the end of my lecture today. Thank you everyone. Allah Hafiz.